In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Prophet Muhammad said, the best ibadat in my ummah is the recitation of Holy Quran. I am Mr. Fayaz Amanullah. I am working as a teacher at Higher Secondary School Nehama Kulgam. Plus, I am also teaching zoology at Sublime Coaching Institute Kulgam. Today, I will deliver another lecture for class 12 immunology, that is cells of immune system. Cells of immune system. As I told you already, there are three lines of defense. First line of defense, second line of defense, and third line of defense. In the third line of defense, it includes immune system, and immune system is made up of special cells called lymphocytes. In a lymphocyte ch group of WBC hund yam son immune system ch banavan. Go isla ko azib lecture cells of immune system. Cells of immune system. Immune system kus ch banavan yam ch WBC hund group of cells hund temus wan lymphocytes. Immune system is formed of a class of WBCs called lymphocytes. Timan salam chhe sana lymphocytes. Yam son immune system banavan chhe. Why sawal lymphocyte yazan chhe. Nikai pet chhe yavan lymphocyte. Lymphocyte wushna humad chhe stem cell of pet vathan. Tim stem cell kai pet chhe yavan. Tim chhe embryos maz yavan from yolk sac to ya fetal liver. Fetal liver. Lymphocytes. Lymphocytes come from stem cells. Stem cells which are produced by yolk sac and fetal liver in embryonic life and bone marrow throughout life. Okay, shabash. Ko tۄہہِ tho yaad ye immune system chu banomut ath mans asan special cell tim gei lymphocytes. Yim lymphocyte kat pet chi van stem cell of pet yivan. Yim stem cell kat pet chi banan. Yim chi banan from yolk sac and fetal liver in embryonic life. Embryos mans asan yolk sac cha extra embryonic membrane asan. Bish liver asan temis mans. Tat chi banan yim lymphocyte the bicho banan bone marrow mans in adults. Adult mans banan bone marrow in after birth. तो वो सवाल यम lymphocyte छे यम छ दय किस्मच आसान. As I told you already, lymphocytes यम छ दय किस्मक आसान. यमन छ ज किस्म lymphocyte आगो T lymphocytes तो ब्यागो B lymphocytes. T lymphocytes to B lymphocytes. T lymphocytes and B lymphocytes. तो वो इसी T सेल क्या गई तो B सेल क्या गई T lymphocyte क्या गई तो B lymphocyte क्या गई तो ये वो इस क्या चुका. Let us take this one by one. Shabash. T lymphocyte. T lymphocytes.
Bone pointer must be T lymphocyte so that you can differentiate it from B lymphocyte. It will be asked in the examination as a short type question, difference between T cell and B cell. Okay. What is T lymphocyte? T what is T? T stands for thymus. They get processed in thymus gland. Primary lymphoid organ thymus gland. Atmashim process gasan. Yim lymphocyte T lymphocyte. Number 2, they have simple surface morphology. They have simple surface morphology. Simple surface morphology. The back point is they have receptor sites for antigens. They have receptor sites for antigens. Yani using T cell chasan, and which surfaces pet asan. Yes, a receptor site them khatra for antigen. मैं उन बात को नहीं तो फिर तां यार antigen क्या को इशा glycoprotein asan on the surface of bacteria, on the surface of microorganisms. Antigen. Acha. The number next, they are long-lived. Yim long-lived asan. Yim age 4 to 5 years. Yim long-lived asan. The back point kesa go. Sani body must kuch T lymphocyte asan. Yim kushna answer. Yim 85% asan. They constitute 85% in our body. So, sani body must T cell asan, T lymphocyte asan, 5%. Okay. Ko tai tho yaad, yim gai T lymphocyte gasan process thymus gland asman. Yim simple surface morphology asan. Yim receptor site asan only for antigens. Yim long lived asan 4 to 5 years. Yim 85% body mans asan. Shabash. The number next. Shabash. Isn't it T cells why asan? The T cells has bachav against viruses, bacteria, protestant fungi. They defend against viruses, bacteria, protozoa, and fungi. Yim as bacteria nishte bachavan, virus nishte bachavan, protozoa nishte bachavan, to fungi nishte bachavan. Bishu Vishnu omut ye T cells karan kam, they work against cancer cells and grafts. They work against cancer cells and grafts. They work against cancer cells and grafts. In a T lymphocyte, cancer cell against the काम कर, the grafts against the काम कर. ये बड़ा बुझ question. The graft go, अगर इसका organ no लागो, transplant करो, that is called graft. They want against him काम करन. Yem T lymphocytes. The number next, you see T lymphocyte che, ili divide che gasan ich banao lymphoblasts on division, they form lymphoblasts. On division, they form lymphoblasts. If we division gasan chiman, imbalance lymphoblasts. Pachima lymphoblast of feature of they move to the site of infection. Lymphoblasts move to the site of infection. Or lymphoblasts move to the site of infection. Okay. Ko mevan beak point im virus against bacteria, protozoan to fungi nishes bachav.
यम करन अगेंस्ट कैंसर सेल्स एंड ग्राफ्ट्स यदि डिवाइड गसन यम बनावन लिम्फोब्लास्ट तो lymphoblast मूव टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट लिखो नंबर नेक्स्ट पॉइंट सो गो यह कर टी लिम्फोसाइट यह मीडिएट कर इम्यून सिस्टम तथा CMI they mediate CMI they play role in CMI पढ़ो इस बुझ पाओ सो गो cell mediated immunity cell mediated immunity cell mediated immunity अथ मन रोल कर यह टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम cell mediated immunity या immune system तो बीच ब्या पॉइंट यह टी लिम्फोसाइट यह कंट्रोल तक सोन सन यह इम्यून सिस्टम कर कंट्रोल दे कंट्रोल इम्यून सिस्टम यम कंट्रोल तक इम्यून सिस्टम न दिन ज्यादा गसन न दिन कम गसन यम रेगुलेट कर दे रेगुलेट इम्यून सिस्टम कंट्रोल या रेगुलेट इम्यून सिस्टम ओके तो यम थो तुम खास कथ याद अबाउट टी लिम्फोसाइट तो वही सवाल यम टी लिम्फोसाइट इन सब क्लास यमाय डिवाइड कर इनटू 3 सब क्लासेस गई हेल्पर टी सेल गई हेल्पर टी सेल्स बे गई सप्रेसर टी सेल्स तो बे गई डिलेड सेल यानी टी लिम्फोसाइटन 3 सब क्लासेस गई हेल्पर टी सेल बे गई सप्रेसर टी सेल तो बे गई डिलेड टी सेल वही सवाल हेल्पर टी सेल क्या गई हेल्पर टी सेल एज द नेम इंडिकेट्स हेल्पर टी सेल गई सो सेल इज बी सेल करन स्टिमुलेट टू फॉर्म एंटीबॉडीज हेल्पर टी सेल्स they stimulate B cells B lymphocytes to form antibodies they stimulate B lymphocytes to form antibodies now helper T cells they help B cells in antibody production helper T cells ब्याग suppressor T cell क्या गई suppressor T cell ये गई T cell is B cell can stimulate not to produce antibodies go इस लिखो suppressor T cell क्या है suppressor T cell they stimulate B cells not to form antibodies they stimulate B cells not to form antibodies go suppress karan antibody formation suppress karan immune system go यह कर stimulate B cell कि antibody यानी अगर antibody level ज्यादा गो अत गसन antibody ज्यादा गसने यम करन प्रॉब्लम क्रिएट तो लिहाजा कर यम करन काम यम stimulate करन B cell not to produce antibodies लिहाजा कर वनो इस antibody level छ खूनस मज आसन यह रोजान रेगुलेट यह कंट्रोलस मज रोजान मैं वो तने T cells करन रेगुलेट इम्यून सिस्टम कंट्रोल करन इम्यून सिस्टम गई ज किस्म सेल ब्या गई डिलेड T cells they play role in sensitivity delayed sensitivity they played role in delayed sensitivity man shim role कर sensitivity पढ़ो इस बचपन इच एलर्जिक रिएक्शन तो तस मन टाइप तो delayed sensitivity man shim role कर कम delayed T lymphocyte तो ये T cell कर वनन T lymphocyte बाकी काम किस करन क्या करन सो पढ़ो इस ब्रोड को 20 लेक्चरस मन तो फिलहाल तलो इस वइन दोयम टाइप सो क्या सो गो B lymphocytes
B lymphocytes. B lymphocyte. B lymphocyte कहाँ वाला है? B lymphocyte. Shall I try to understand? B lymphocyte क्या है? B stands for. Shabash. B stands for bone marrow. Because one they get processed. Yim process gasan in bone marrow. Bone marrow yavano bursa of fabricious. Bursa of fabricious. Kesh burden mazazan. Bursa of fabricious. Mevan yav yus cell bone marrow was process ges, mature ges. That's one of B lymphocyte. या बर्डन मज आसनी बोन मेरे मज बर्सा फेब्रिशियस तिमन मज तथ मज गसन इम प्रोसेस नंबर 1 नंबर 2 लिखो दे हैव कॉम्प्लेक्स सरफेस मॉर्फोलॉजी दे हैव कॉम्प्लेक्स सरफेस मॉर्फोलॉजी नंबर नेक्स्ट दे हैव रिसेप्टर साइट्स they have receptor sites for both antigens and antibodies. Okay. We have receptor sites for antigens and antibodies. In antibody protein against antigen. The antigen is receptor site and the antibody is receptor site. Okay. So number next point. So they are short-lived. Short-lived as a B lymphocyte. Few days as an age. They are short-lived. Why so as khonas mas kuza shim as body mas kuza shim. Yimchi me won boin 5% T lymphocyte. At bachi 15%. 15% is as a B lymphocyte. They constitute 15% in the body. वो body में 15% आसन B lymphocytes. Okay. The number next क्या सच्चो? ये B lymphocyte यजन चे, इसे mediate करना immune system आ, तस्वन HI. They mediate HI. HI means humoral immunity या humoral immune system. Mediate करण humoral immunity या humoral immune system. ये पढ़ो इस बच पाहमत. शाबाश. तो नंबर नेक्स्ट क्या है? इस बचावन इस खाली बैक्टीरिया एंड वायरसेस निश. They defend against bacteria and viruses. They defend against bacteria and viruses. Okay. But इम short lived आसन इम कम दो उम्र इम 15% सानी बॉडी मज आसन इम मीडिएट करन humoral immunity पढ़ो इस पामत है इम डिफेंड एस करन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस बैक्टीरिया एंड वायरस निश बचाव ओके the number next point on division they form plasma cells. Yeli B cell divide कर जाता तो वो शुभ पहमत यंते वन भाई यों mechanism इनके कुछ action करन यदि हम divide करसन चीम B cells इम च बनावन plasma cells मगर plasma cell चन move करसन किया to the site of infection plasma cells do not move to the site of infection. Plasma cells do not move to the site of infection. Plasma cells move to the site of infection. Okay. The number next is a point. The B lymphocyte come against cancer cells and grafts. They do not work against cancer cells and grafts. They do not work against cancer cells and grafts. The back point go, they do not regulate
immune system. They do not regulate immune system. यम छन immune system control करन के, यम छन immune system regulate करन के. Okay. कुताई थो याद on division they form plasma cells. ठीक है. Plasma cells do not move to the site of infection. यम छन site of infection पर गसन के. They do not work against cancer cells and grafts. Cancer cell and grafts against छन यम काम करन के. They do not regulate immune system. यम छन immune system regulate करन के, control करन के. Okay. So these are some important features of B lymphocytes. The one सवाल how they work, कि कुछ काम करन, उस पर वैस बत पावन. So this was my today's lecture, cells of immune system, that is T lymphocyte and B lymphocyte. तो ये क्यों असल पुछन differentiate कर T cell तो B cell. T cell गई यस process गई thymus glands मस, B cell गई process गई bone marrow मस. T cell is simple surface morphology asan. It's complex surface morphology asan. T cell is long lived asan. The B cell is short lived asan. T cell is role karan in CMI, push karan role in HI. The T cell is usually divide gasan jish banaun lymphoblast. Yel B cell gasan divide banaun plasma cells. Lymphoblast is more gasan to the site of infection. Plasma cells gasan kihin more to the site of infection. ठीक. तो बिश ब्याक चीज यथ मन सेल अख आसान, यथ मन हेल्पर सप्रेसर टी सेल आसान, सो इम्यून सिस्टम रेगुलेट करन. ये इम्यून सिस्टम रेगुलेट गसान कहीं. तो दे वर्क इन टी लिम्फोसाइट, दे वर्क अगेंस्ट कैंसर सेल्स एंड ग्राफ्ट्स. तो बी लिम्फोसाइट छन करन तिम अगेंस्ट काम कहीं. टी सेल से बचावन बैक्टीरियास निश, वायरसस निश, प्रोटोजोआस निश, फंजाई निश. तो बी सेल से बचावन बैक्टीरिया एंड वायरस निश. को यमो पॉइंट्स से डिफरेंशिएट कर टी लिम्फोसाइट तो बी लिम्फोसाइट. तो पगह से पढ़े इंशाअल्लाह ताला कल हम उठाएंगे एक और क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम. टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम ज टाइप, अख गो CMI बी गो HI. तो इस पगह पढ़े CMI तलो इस पगह तम पत तलो HI. Okay, thank you for this good cooperation.